गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। आज हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो anaerobic respiration means it's a respiration during which the oxygen is not used is called the anaerobic respiration. So it's a kind of respiration in which the oxygen is not used, right? Now first time who discovered the anaerobic respiration? So Shank and Pasteur discovered the anaerobic respiration, or it is called the fermentation. Actually the fermentation is similar as anaerobic respiration. The fermentation process is similar as anaerobic respiration. But what are the respiration? What are the difference between fermentation and anaerobic? So fermentation, it's a physical process. It is a physical process. Anaerobic respiration, it's a chemical process. Fermentation, it releases the energy. It releases the energy in a form of heat. Means the fermentation में energy release होंगी तो it is form of heat. But here it releases the energy in a form of ATP. So during the anaerobic respiration, very small amount energy is released during the anaerobic respiration. Okay, so अगर anaerobic respiration plant में हो रहा है तो it will form the ethanol, और अगर anaerobic respiration animal में हो रहा है तो it will form the lactic acid. So there are two type of the anaerobic respiration. Okay, one is the lactic acid formation and second one is the alcohol fermentation. First, alcohol fermentation. First is alcohol fermentation and the second one is the lactic acid fermentation. Second is the lactic acid fermentation. In alcohol fermentation, the enzyme used, it is known as zymase, and the zymase enzyme first time discovered by the Buchner. The Buchner was discovered the zymase enzyme, and this zymase enzyme is used in the alcohol fermentation. तो alcohol fermentation में क्या होता है? So in alcohol fermentation we all know that first glucose undergoing the glycolysis, and glycolysis is the common pathway for both aerobic and the anaerobic, and it will produce the two molecules of pyruvic acid, that is CH3 C double bond O C double OH. It is the pyruvic acid. Now this pyruvic acid is undergoing the decarboxylation. It is undergoing the decarboxylation process with the help of TPP, thiamine pyrophosphate, और वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. तो सोचिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा. ओके, एंड इट फॉर्म द टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO and it is called the acetaldehyde. It is called the acetaldehyde. So during the alcohol fermentation, glucose first break down and convert into the pyruvic acid. This pyruvic acid, with the help of decarboxylase enzyme and TPP, thiamine pyrophosphate, it convert into the two molecules of the acetaldehyde, and during this reaction the two molecules of CO2 is released. Okay, because of the decarboxylation process. Here the carbon, 3 carbon. Now in this, here the 2 carbon is there. Now this acetaldehyde further, with the help of ethanol or alcohol dehydrogenase, okay, with the help of alcohol dehydrogenase enzyme, this acetaldehyde is converted into the two molecule of the CH3CH2OH, and during this reaction NADH2 is converted into NAD. Means ये reaction में क्या होगा? NADH2 convert into NAD. So दो hydrogen molecules remove होते हैं, and that hydrogen molecules is accepted by acetaldehyde.
okay, and it is converted into ethanol. This is known as the ethanol. So यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में से 2 NADH2 बनते हैं, वही 2 NADH2 यहाँ यूज हो जाएंगे. मीन्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हम जो NADH2 में से 6 ATP कैलकुलेट करते हैं, वो 6 ATP यहाँ फॉर्म्ड होंगे नहीं. मीन्स ओनली 2 ATP इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस reaction. That's why we can say that a very small amount or a little amount of energy is formed during the anaerobic respiration. तो ये हो गया अल्कोहल फर्मेंटेशन. आइए अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जनरली किस में होगा, एनिमल में होगा. तो वहाँ पर भी ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और ग्लाइकोलिसिस में जाके वो क्या बनाएगा, 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, राइट. और उस टाइम पे भी हमको 2 NADH2 मिलेंगे. ओके, नाउ दिस पायरुविक एसिड, दिस इज कॉल्ड द पायरुविक एसिड. नाउ दिस पायरुविक एसिड इज एंटर इनटू द with the help of lactate dehydrogenase enzyme. Which enzyme? Lactate dehydrogenase enzyme. And ये रिएक्शन में भी क्या होगा, जो NADH2 फॉर्म्ड हो रहे हैं, this 2 NADH2 is convert into NAD. तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वापस ऐड हो रहे हैं. तो यहाँ क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है दैट इज CH3CO है, तो दोनों के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा HH, और ये हो गया COOH. दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड. Okay, this is called the lactic acid. So now this is called the lactic acid fermentation. और यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. ये कब होगा, इट इज फाउंड इन द ह्यूमन और अदर एनिमल. जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सो मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलता है. एट द सेम टाइम द मसल अंडर गोइंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन और द लैक्टिक एसिड डिपोजिशन स्टार्ट. अब वापस ये लैक्टिक एसिड जो है वो कौन से साइकिल में जाएंगे, कोरिस साइकिल में जाएंगे, और इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर सिस्टम. ओके, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिट हो रहा है मसल्स में, वो कैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. ओके, दैट इज नोन एज द कोरिस साइकिल. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज नहीं होता. किसने फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया, शैंक एंड पास्चर ने. इट इज सिमिलर एज फर्मेंटेशन, बट फर्मेंटेशन है वो फिजिकल प्रोसेस है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ हीट. और एनारोबिक है वो केमिकल प्रोसेस है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो ATP फॉर्म में रिलीज होता है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. अगर वो प्लांट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, और उसमें क्या बनेगा, तो उसमें फॉर्म होंगे इथेनॉल एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड. अगर वो एनिमल में हो रहा है तो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और उसमें फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड. ओके, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन. थैंक यू.